सबको दिख रहा है स्क्रीन, है ना? ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू कित। सो लेट्स स्टार्ट। देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इफ यू वांट टू कवर विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन मीन्स sometimes you have data and you have to plot this, you have to visualize this, okay? So इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा विजुअलाइजेशन that particular module को. So let's import it, like import matplotlib.py plot as plt. So this is import matplotlib.py plot as plt. Once you are importing this particular module, okay? So import matplotlib.py plot as plt. So let's import this. ठीक है? So I think all of you are able to import this particular thing, okay? So this is basically in Python, this is a module called matplotlib, and using this matplotlib we are able to visualize any data. Any data means any data. The issue is this, you have to write a program, okay? And this is actually, you can say, disadvantage here, but if you go into Tableau or Power BI, there is no need to write a program. Just you have to click on the tab and you are able to visualize the data. So this is the main, difference between your matplotlib and you can say Tableau. So Tableau is really important, or you can say Power BI, okay? Even if you are looking for a job in data science or data analytics, definitely you need Tableau. Without that it's very difficult to get a job. आपको आना चाहिए तभी आपको वो मिल सकती है जॉब, ठीक है? अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है? सो लेट्स रन इट. देखो मैं एक यहाँ पे आपको सिंपल से पहले कुछ कराता हूँ. जैसे हमने एक डेटा लिया खुद से, जैसे मैं एक्स लेता हूँ और सपोज मैं इसमें डेटा लाता हूँ 3 4 5 7 9 मे बी 12 16 20 22 25 30 33, and suppose I want to plot this, so I can write plt dot plot and give the x here. See this, we are able to plot this. This is basically a line. Here you can see this is basically a line, okay? So if you want to plot a line, you can just write a matplotlib and give the data and plot it, and you are able to plot this. Very simple, okay? Suppose you want to plot between two data, like suppose here we have x. Let's try to write a y also. Suppose this is y here. Take some data, like maybe with regarding to x, let's go for y. So maybe see, I'm putting some data, maybe I'm taking 1 2 3, like number of data has to be same. मतलब जितना x में डेटा होगा उतना ही तभी तो पॉइंट्स बनेंगे. So let's check the length of x, and that is para. So let's do one thing. Let's make here y एक वैल्यू सा दिया, and let's plot it, like let's make a data for I in x. y dot append, आप लोग को पाइथन ऑलरेडी आता है, करेक्ट? सो इसमें तो किसी को दिक्कत की बात होगी नहीं. So this is y. Now let's plot between x and y. So plt dot plot x comma y, and see this, it looks like a square plot. Actually it's a non-linear plot, क्योंकि हमने यहाँ पे बनाया भी है non-linear plot, ठीक है? We created here non-linear plot. So अब देखो non-linear plot आ गया, because we created here non-linearity I की power 3. So this is basic simple plots anyway. So listen, this particular module is here, and we are importing that module, and using that module we'll try to plot something, okay? See, it's really easy, okay? It's really easy to plot some data, but the problem is, like suppose you have a very amount of data and then you have to visualize this, you have to write very good code. If you're not okay with those codes, if you don't remember some methods in that matplotlib, you're not able to plot those,
But in Tableau, what happened? These are the particular points are here. Just you have to click and you are able to find the plot. Actually, what I'm trying to say, that's why Tableau is useful in industry. Okay, because that was very very easy and very very, very very, you can say, familiar with, लाइक यू कैसे यूजर से बहुत बेटर है वो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से. सो इवन अगर आप एक बार भी उसको देखो समझो तो समझ में आएगा कि यार ये तो बहुत आसान है, बिकॉज यू कैन विजुलाइज योर डेटा इन एनी फॉर्मेट एंड इवन यू आर एबल टू प्लॉट इन अ गुड वे लाइक कलर्ड एंड एवरीथिंग. यहाँ भी आप कर सकते हैं कलर्ड वगैरह, बट एनी वे दैट इज रियली गुड. सपोज यू कैन राइट हियर ए कलर, यू कैन राइट हियर ऑल्सो. Suppose you want to make a color red, so you can write your color is equal to red, so it will be red, it will be red. Okay, anyway, even in like we are not able to make, suppose if you want to कि ये इसका width कितना हो, जो ये line आई है इस line की width कितना करना चाहें, we are not able to do here, but in Tableau is very easy, we can do this. Yeah, if you want to do this here also, you have to write a program that will be take lots of time. Okay, so if you are working as a data analyst or business analyst, you don't have much time to do such things. Okay, anyway, so let's go, let's see this, again see this data. This is again a x, and if you want to plot this data, just write plot dot x, and you are able to plot this one, this, so sorry, yeah, this one. See here, if you write plot a comma and giving the star, what happen, this point become star, like see this. Suppose here we plot this data, we plot this data, we plotted this data, so you are able to see this. But if you are able to plot here, see this, you are giving a star here, and see due to star, like जो ये data है, this plots become a star here. Getting my point? So we can do like this also. See, if you want to star with all the data points added also, you can give it star with this sign. Okay, so you can give the data like आप डेटा को प्लॉट कर सकते हैं, नॉट ओनली विथ स्टार, विथ दिस कनेक्टेड. ठीक है, सो यू कैन से कनेक्टेड स्टार. ये इंपॉर्टेंट है, कई बार हम ऐसा करते हैं कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो हमें दिखे भी एग्जैक्टली कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारे पास, एंड यू प्लॉट दिस. समटाइम्स इट इज रियली यूजफुल. ठीक है, या दिस पावर प्लॉट, यू कैन डू द पावर प्लॉट. डोंट वरी, गो फॉर एसएनएस, अभी छोड़ दो इसको. Anyway, so this is a simple plot, very simple plot. Let's go for a bar plot first. Let's talk about how can we do the bar plot. Okay, तो ये तो बहुत ही simple plot है ना, मतलब नहीं है. Let's go for bar plot. So just a minute, let me share the another file. इस प्रॉब्लम में, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया था आप लोगों को बनाने के लिए, इस प्रॉब्लम में कहाँ गया प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम में ऐसा क्या है जो आप लोग नहीं बना सकते? जस्ट वी हैव दिस यूजर डिपेंडेंट, जस्ट राइट दिस फंक्शन, and function we are passing all this value, names, salary and saving plot. Write zip, go into y and saving plan, calculate the percentage, make a list, append all the value and plot the bar graph. इसमें कहाँ ऐसा है जो आप लोगों को लग रहा है यार ये चीज तो नहीं समझ में आ रही है अपने को? बताइए, एनी पॉइंट एनीवेयर, लाइक यू आर, मतलब मुझे समझ में आना कहाँ पे आप लोगों को डील करने में दिक्कत आ रही है, कौन से प्लॉट में, कौन से, इसमें क्या ऐसा प्रॉब्लम था, बताइए आप लोग जरा. एनी वन ऑफ यू बोलो यार, क्या सभी को क्लियर है ये प्लॉट? ऑल ऑफ यू, यस या नो, जस्ट राइट यस नो. थैंक यू, थैंक यू ममता, थैंक यू राहुल. थैंक यू तान्या. बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा? बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा भाई? बोलो. अब लिसन द क्वेश्चन.
आप लोग कहां फंस रहे थे, प्लॉट करने में फंस रहे थे या पाइथन फंक्शन लिखने में फंस रहे थे? यू गाइस, अगर आप बताओगे तो भी मैं उस हिसाब से क्वेश्चंस बनाऊंगा, क्योंकि देखो राइट नाउ आई कांट टीच यू पाइथन, सो मैं फिर अवॉइड करूंगा रियल प्रॉब्लम देने से, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि पाइथन में चैलेंज आ रहा है क्या? अच्छा, थैंक यू। पाइथन में सब लोग फंस रहे हैं यार। तुम लोग पाइथन पढ़े हो ना यहीं से, सेटपा से, सभी लोग? किसने पढ़ाया है पाइथन? Admittedly. So let's go for other function. We want to make a function here. Just a minute. See, suppose I am making a function where I will give the data, any particular data, and then function will return whether it's a prime number or not. Okay. I will provide any data to the function. A function will return any, this is prime number or not. So all of you are aware with what is prime number? आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ओनली वन, आइदर वन और इटसेल्फ, करेक्ट? दैट इज प्राइम नंबर ना। आई बिलीव सबको पता है ये बात तो, है ना? कि प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर जो अपने आप से डिवाइड हो और वन से डिवाइड हो। ठीक है भाई, ठीक है सब, ऑल ऑफ यू ओके विद दिस? सो okay, very good. So let's write a function. Let's write a function. Just a minute. Give me here the title. Let's write my function, and I will give a data that will return whether it's a prime number or not. Let me write diff. It will return prime, so I'm give pr and give the data, and I have to check whether it's a prime number or not. So how can I check it's a prime number or not? ध्यान समझना कि मैं एक next question आपको दूंगा बनाने के लिए. That question is very good. You have to do this. So let me write this question. मैं एक data provide करूंगा. That function will, देखो मैं फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि दिस इज नॉट माई पार्ट, आई हैव टू टीच यू प्लॉटिंग, बट बिकॉज आई हैव टू आस्क सम क्वेश्चन दैट्स आई एम टीचिंग दिस पार्ट. ओके, सो diff pr and will provide the data that function will return whether it's a prime number or not. Okay, so let me write here. I'm writing this for I in range, give from 1 and this go for x plus 1. So मैं एक एक्स्ट्रा जाऊंगा तभी तो एक्स्ट्रा चलूंगा. और नाउ आई एम ट्राइंग टू डू दिस. सी दिस, आई एम राइटिंग हियर के काउंटर लेता हूँ. सो k इज इक्वल टू 0, दिस इज अ काउंटर बेसिकली. लेट्स चेक इट. if x divide by I is equal to 0, means this is a divisible by this 0, then we can do k is equal to k plus 1. and यहाँ पे आ जाओ, देखो if k is equal to 2, so then print what? It's prime number. It's a prime number, and sorry, it's a prime number, and keep that number. That number is basically what? X. Else right here print no, it's not a prime number. No, it's not a prime number, and give here kya? X. So let's run it. Go for PR and provide the data. Suppose I'm giving 123. See, it's not a prime number, but let me give a prime number like I'm giving 39. So 39 is prime number, no? Why it's saying it's not a prime number? 39. अच्छा 39 is not a prime number ना. 3 से तो divisible है. 29 is a prime number ना. Yes, prime. Correct. It's working. Correct. Check any number. 13 is a prime number. Yeah, correct. Check other number. 7. C is a prime number.
Give 49. 49 is not a prime number. Yeah, it's not a prime number. So it's working. Clear? It's working. हाँ या ना, it's working ना. ये बताओ समझ में आया सभी को, नहीं आया जस्ट लेट मी नो, यस और नो. वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड अंकित. सो अंकित वशिष्ठ, कुछ समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू अंकित. समझा संबोधि, समझा, वेरी गुड. सो लेट मी गिव वन प्रॉब्लम एंड यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम. अब देखो, मैं प्रोग्राम को थोड़ा बदलता हूं, आप सभी को क्वेश्चन लिखना है. लेट्स गो टू द हियर एंड लेट मी गिव यू द क्वेश्चन. Sorry, I'm giving one problem, see carefully. This problem is, this time I am providing you a list, like maybe m is a list. Give the data 12, 23, 44, 49, 52, 39, 29, 7, 32, 13, 139, 33, 11, 70. Now write a program. Now this is your task. Write a program, write a function that will return which is prime in this particular list. इसका मतलब ये हुआ, इस बार हम फंक्शन में क्या डालेंगे, लिस्ट को पास करेंगे और आपका जो प्रोग्राम है वो बताएगा कि कौन कौन से इसमें प्राइम नंबर हैं. प्लीज डू फास्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज डू फास्ट. करिए करिए करिए. आप लोग बना रहे हैं सभी लोग या मैं बनाऊं? मैं बनाऊं या आप लोग बना रहे हैं? बनाइए, 1 मिनट तक मैं कुछ आप लोगों को शेयर करता हूं, आप लोग बनाते रहिए. देखो मैं आप बनाता हूं, ध्यान से देखना, हो सकता है कि थोड़ा सा आपको समझ में ना आए, बट लेट्स डू दिस. देखो मैं लिखता हूं डिफ, बट ये आपको आना चाहिए यार, मतलब बता रहा हूं रियलिटी में ना आपको आना चाहिए सब चीजें. सो लेट मी राइट अ फंक्शन, मे बी दैट फंक्शन इज mn, और हम इसमें पास करते हैं एक डेटा को, दैट इज x. इसके अंदर बहुत सारा डेटा है एंड वी हैव टू फाइंड कि विच वन इज लाइक वेदर इट्स प्राइम नंबर और नॉट. ओके,
सो लेट्स डू दिस। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, बहुत लोगों को समझ में आए ना आए, फिर ध्यान से देखना। फॉर आई इन एक्स, सो मैंने एक किया और फिर लिखा k इज इक्वल टू 0 एज अ काउंटर, और फिर मैं लिखता हूँ फॉर j इन रेंज 1 कॉमा i प्लस 1, और फिर मैं क्या करता हूँ, इफ i डिवाइड बाई j इज इक्वल टू 0, सो काउंटर चला दो k इज इक्वल टू k प्लस 1। एक सेकेंड यार, एक सेकेंड। एनी वन ऑफ यू, एनी डाउट हियर? क्वेश्चन समझ में आया था, फिर मैंने सोल्यूशन दिया, ये लूप फंक्शन बनाया, एंड दिस इज द आउटपुट। एनी डाउट एनी वन, जस्ट लेट मी नो। किसी को डाउट है इसमें तो बताइए। बहुत सिंपल नहीं है ये, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। एनी डाउट एनी वन? बोलिए जी, किसी को डाउट है? नो, वेरी गुड, वेरी गुड दीपक। बाकी लोगों को डाउट है क्या? देखो यार, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस में, मैं बार बार बोलता हूँ, पाइथन एकदम आना चाहिए, बहुत ढंग से आना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। इन जैसे मैं दो तीन बातें हमेशा सबसे बोलता हूँ बच्चों से, कि दो तीन चीज़ों पर ध्यान रखो। कोई भी अगर तुमसे प्रोग्रामिंग लिखने के लिए बोलेगा, तो अक्सर एज ए फ्रेशर, तो वो तुम्हारे कैंपस प्लेसमेंट में, तो या फिर कहीं पे भी एज ए फ्रेशर, दे विल आस्क सच क्वेश्चन, लूपिंग लिखने के लिए, कोई पैटर्न ड्रॉ करने के लिए, कोई फंक्शन लिखने के लिए। थ्योरेटिकली पूछेगा तो वो उधर से पूछेगा उप साइड में, कि इनहेरिटेंस क्या होता है। मान लो कि तुम्हारे पास एक पेरेंट है, 3 चाइल्ड है, तो या फिर चार, 2 पेरेंट्स है, एक चाइल्ड है, वो चाइल्ड जो है वो दोनों के कैसे इनहेरिट करेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो वो लेफ्ट वाले करता है, फिर राइट वाले कैसे करेगा। ये सब चीज़ें खूब पूछते हैं थ्योरेटिकली। सेल्फ क्या होता है, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता क्या है, कैसे हम उसको बिल्ड करते हैं, सेल्फ किसका किसका एड्रेस रखता है, कैसे हम किसी मेथड को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें वहाँ पे पूछते हैं। थ्योरेटिकल पॉइंट पे सब उप से पूछेंगे, मैक्सिमम मल्टी थ्रेडिंग क्या है, थ्रेडिंग क्या है ना, ये इनहेरिटेंस क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए ढंग से, ठीक है। मतलब खूब उसमें, मतलब खूब उसमें थ्योरेटिकली खूब ढंग से पता होना चाहिए, वहाँ पे ढंग से बताना भी चाहिए, तो वो उस पर फोकस देना चाहिए। और इधर जो इधर है, लाइक लूपिंग हो गया, वाइल लूप, फॉर लूप, पैटर्न ड्रा करना हो गया, फंक्शन बनाना हो गया, इसमें खूब प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि कोई भी आप पूछेगा आप सेंटर में, तो वो बोलेगा ये बना के दिखाओ, एलसीएम का लिख दो, या फिर बोलेगा प्राइम नंबर कैसे करते हैं ये बना के दे दो। तो ये आपको इधर के जो खूब मेथड्स, मतलब प्रोग्राम लिखने चाहिए, और उधर वाले पे खूब थ्योरेटिकली अपने आप को एकदम स्ट्रॉन्ग करके रखना चाहिए। हाँ, प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, उधर लिखना भी चाहिए, प्रोग्राम भी लिखना चाहिए, मैं तो क्लास में लिखवाता भी हूँ, बट मैक्सिमम आई ट्राई टू गिव कि इधर बहुत प्रैक्टिस, अच्छा इधर प्रैक्टिस है तो उधर प्रोग्राम लिखना इजी है, तो ये प्रोग्राम लिखना उधर क्या लॉजिक बिल्ड करना नहीं होता। एक बार आप समझ गए, इधर लॉजिक बिल्ड करना है, उधर दिमाग लगाना होता है। उधर क्या आपको पैटर्न पता है कि ठीक है, क्लास लिखना है तो क्लास ऐसे लिखेंगे, इसमें मेथड्स डिफाइन करेगा। मेथड क्या है? फंक्शन है, आपको पता है तो फंक्शन लिख सकते हो, है ना। सब कुछ जो भी है सब कुछ वही है एक्चुअली। तो अगर आपको फंक्शन तक प्रोग्रामिंग ढंग से आती है, तो उधर वाला थ्योरेटिकली पता चलेगा, तो सब कुछ आप लिख सकते हैं। सो आपको हमेशा इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। बट एनीवे, है ना, तो अगर ऐसे नहीं करोगे तो यू आर नॉट एबल टू राइट अ प्रोग्राम। सो आपको ये सब करके अपने आप को एकदम ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ट्राई टू गिव टाइम टू यू गाइस ना, अपने को थोड़ा सा प्रोग्रामिंग आप लोग स्किल कीजिए, ठीक है। मतलब थोड़ा सा ना चैलेंजिंग है, बट प्लीज़ डू दिस, प्लीज़ डू दिस, है ना। अगर कोई स्पेसिफिक जिसको लगता है ना यार कि मैं एकदम पाइथन में, मतलब देखो जिसको थोड़ा बहुत इशू है, ठीक है,